ट्रीज कैन नॉट कम, ट्रीज कैन नॉट कम। फैक्ट गलत बोलते कि नहीं बोलते? फ्यू एंड टाइम पास यहां नहीं कर रहा हूं सर, अंटार्कटिका। यस और नो? फिर मैंने क्या किया था, इनको डिवाइड किया था, फिर मैंने कहा यहां पर फॉरेस्ट है, यहां पर फॉरेस्ट है, यहां पर फॉरेस्ट है, यहां पर फॉरेस्ट है, यहां फॉरेस्ट। ठीक है, इसको हमने ब्रिटिश टाइप कहा, ब्रिटिश। इसको यहां भी हमने फॉरेस्ट लिखा था, टाइगर। ट्रू और नॉट? डिड आई नॉट से कि यहां पर ग्रास होगी, ग्रास, और यहां पर भी ग्रास होगी? ये 30 to 60 में आता है। ये टेम्परेट ग्रासलैंड है और ये क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। डू यू सी द प्रोसेसिंग एरर? डू यू सी द प्रोसेसिंग एरर? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, तो 30 to 60 तो होता है, 30 to 60 में बहुत सारी चीजें होती है बच्चों। यहां पर मेडिटेरेनियन वेजिटेशन होता है, यहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड होता है। एंड आई टोल्ड यू, हमेशा मिडिल में आकर सेमी एरिड होगा। सेमी एरिड, डू यू रिमेंबर? मिडिल में आके हवा यहां तक पहुंचेगी नहीं, अगर यहां से भी आ रही है तो भी सेमी एरिड है, इधर से आ रही है तो भी सेमी एरिड है। सिंपल कॉन्सेप्ट। होगा क्या, वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट देम, एंड व्हेन वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट देम, डिस्पाइट ऑल द मेहनत, डिस्पाइट ऑल द मेहनत, ऑल द गुड इंटेंशंस, पूरा फोकस इस पर है, ये मार खा जाएगा। तो एज अ टीचर हैव आई गिवन यू दिस? ये भी दूंगा, माय प्रॉमिस, दैट हैज टू बी देयर। शुड यू गो बैक होम एंड रिवाइज? ओह यस, दैट शुड बी। वी सेड यू एंड आई आर पार्टनर्स, बिल्कुल करेंगे, बट उसके बाद कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, कनेक्ट किया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट? टू टेल यू दैट, मुझे क्या बनना पड़ा, भैंस बनना पड़ा। आई हैड टू बिकम अ कैटल। कोई बात नहीं, आई एम ओके ईटिंग द ग्रास हियर आल्सो, हियर आल्सो। माय पर्सनल फेवरेट विल बी टेम्परेट। तो टेम्परेट ग्रासेस में, टेम्परेट ग्रासलैंड में यू विल फाइंड द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री यहां पर मिलेगी, मीट इंडस्ट्री यहां पर मिलेगी, बट यहां पर क्या मिलेगा? यहां जानवर नहीं मिलेगा भाई। यहां पर क्या कर लो, शिकार कर लो, किल देम, you can hunt them, but here you can rear them up. Think about it, logic, 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 and things will keep on explaining. Is everyone okay? Is everyone okay? फिर कोई बोला कि सर वो न्यूट्रिशियस क्यों नहीं आ रहे? भाई आपको मैं तिनका दे रहा हूं, आप खुद देख लीजिए यहाँ पे गाय भैंस को अगर खाना खाना हो, जो भी हम डाल रहे हैं उनके पास हरी ताजी घास और सूखी हुई घास, कौन सी ज्यादा अपने न्यूट्रिएंट्स रखे होगी? सोचिए क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, फिर भी मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ। एंड समबडी सेड ना, बीच में किसी ने, चंपक नंदन बोला था, अरे पढ़ाइए बेटा यही वाला, तुझको यही चाहिए। हाँ, मेरा बच्चा कोई बात इकट्ठा करने का, ठीक है, एकदम मजनू भाई टाइप पेंटिंग करेंगे, अब उनको सवार लाए, वी विल एंजॉय दैट, कोई टेंशन नहीं, ऐसे बहुत घूम रहे हैं। दिस इज नाउ ओनली ऑन स्लाइड, सो योर मटेरियल इज कमिंग टू यू। अब कोई चिंता नहीं, मटेरियल के आगे बढ़ेंगे। बाकी मेरे सर्किट मुन्ना भाई जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको एक ही चीज समझ में आई है, भाई मैंने रट लिया, मेरे को पता है, ये ना प्रेरी है, ये पैम्पा है, ये लानोज है, ये सवाना है, और यहाँ पे फेल्ट है, यहाँ पे डाउन है, और ये यूरोप का है पुस्ता, ये यहाँ पर हमारे पास स्टेपी है, और यहाँ मंचूरियन है। भाई मेरे को सब पता है। क्वेश्चन आएगा प्रोसेसिंग का, तो चंपक नंदन भैया, यूपीएससी हमको समझ नहीं पा रहा है, यूपीएससी नहीं समझ पा रहा, तुम नहीं समझ पा रहे। आई हैव सीन पीपल आफ्टर 6 अटेम्प्ट दे से यूपीएससी डजंट अंडरस्टैंड मी। हेलो, व्हाई शुड यूपीएससी अंडरस्टैंड यू? यू शुड अंडरस्टैंड यूपीएससी, नो? इमेजिन द ब्यूटी ऑफ द लॉजिक, यूपीएससी डजंट अंडरस्टैंड मी। पुरुष नहीं, महापुरुष। ऐसा नो, ये रट के रटान वालों के लिए, आई नो देयर आर लेफ्ट ब्रेनर्स, तो उनके लिए भी तो देना है ना, खाना तो देना है। बफेलो को खाना देना है कि नहीं देना? तो बफेलो खाएगी। एवरीवन, इफ आई मेक these lines, this is my 0 degree line, this is my 30 north, 30 south. So any grassland which is coming here, any grassland which is coming here बच्चों, what will this be? Tropical grassland. And any grassland which is coming here, any grassland which is coming here will be what? Temperate grassland. Simple logic, simple logic. Is everyone okay? इनके नाम बता दूंगा, आई विल टेल यू ऑल द नेम्स। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेट मी राइट द नेम्स, पैम्पाज, PELD, बेल्ट, डाउन्स, प्रेरी, PRAIRIES, और यूरोप में क्या है, स्टेपीज। ठीक है, और यहां पर एशिया में मंचूरियन। दैट्स इट। आगे का नाम बताता हूँ, फोटो दिखा दीजिए आपको। अगेन आवर माइंड रियली लाइक्स रियल थिंग्स। दिस इज हाउ द सवाना विल लुक। मोस्टली ग्रासेस, कैन यू सी ड्राई ग्रासेस कैसे होते हैं? ड्राई ग्रासेस दबाएगा, सब कुछ जाएगा, एंड दीज आर टॉल ग्रासेस, एंड दीज आर एनिमल्स। अब बताइए, इफ इट वाज अ फॉरेस्ट, कैन द एनिमल्स हाइड? यहाँ पे आप इनका शिकार करो, बिग गेम कंट्री, बिग गेम कंट्री। ठीक है, तो मैं किसी और का टाइम पास यहाँ नहीं कर रहा हूँ सर। अंटार्कटिका में फिर रही होगा, अंटार्कटिका आने तो चाचा, पहले ये समझ लो, अंटार्कटिका में टूंड्रा होगा, अंटार्कटिका में चाचा आइस कैप होगी, फिर वही लेफ्ट ब्रेन बेचारा रट के बैठा हुआ है, किसी तरह से वो उसको जोड़ना चाहता, पहले ये समझ ले भाई। गिव मी द चांस, मैं लेकर
जाऊंगा ना अंटार्कटिका, आई प्रॉमिस यू। जो बता रहा हूं उसमें कुछ भी हवा में फिल हो जाता है, नहीं मैं जस्टिफाई करूंगा, माय मिस्टेक। अब मैं उसे जस्टिफाई, आई विल प्रूव द टीचर दैट आई नो मोर। व्हाई आर यू प्रूविंग? व्हाई डू यू हैव टू प्रूव? लर्न इट। नो, so this grass is a dry grass. In fact, this grass at times becomes very tall. Grass can be 3 meter tall. 3 meter tall. So 3 meter तक means your room is 3 meter. तो ग्राउंड से लेकर छत तक इतनी ऊंची घास हो जाएगी। बट सर यू सेड ग्रास तो ज्यादा ऊपर जा ही नहीं सकती, वो तो मुड़ जाएगी, झूल जाएगी। यस और नो? ग्रास तो लहरा जाएगी। ट्रू और नॉट? यू सेड सर ग्रास विल गो डाउन, बट इफ इट इज अ ड्राई ग्रास, थिंक अबाउट अ ड्राई ग्रास, सिर्फ तिनका हो, वो लंबा जाएगा कि नहीं जाएगा? This is what is, and it becomes so tall that savanna grassland is also, the grass is also called elephant grass. So where do we find elephant grass? In which grassland? Tropical grassland. Tropical grassland. Do you see a park landscape? Trees, grasses. Park landscape, trees, grasses. Is everyone okay? सर डेंस होने की वजह से स्ट्रेट रहेगा। बेटा सॉफ्ट घास ले लो और उसकी गड्डी बांध दो, वो भी झूल जाएगी। ट्राई करके देख लो। डेंसिटी से कुछ नहीं है। अगर ये सॉफ्ट होती तो टेल मी इफ दिस वाज ग्रीन विल इट नॉट गो देयर? ये ले भाई डेंसिटी वाला दिखाता हूं। कहां से लॉजिक लगाते हैं यार? इतना टीचर सिंपल बता रहा है कि यार सूखी हुई लकड़ी का तिनका हो जाता है। तिनका इन आई लिव इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वी हैव फर्नीचर विच इज मेड अप ऑफ बेंत का फर्नीचर, वो घास से बनता है, रीड का फर्नीचर, सिंपल वो है। लेकिन सर सारी घास एक साथ चिपक जाएगी ना, झुकेगी नहीं। अब झुकाएगा, ये जो पुष्पा तुम बन रहे हो ना, झुकेगा नहीं। ये है, ये सारा डेंस है बेटा, पुष्पा मत बनाओ इसको। ये बेचारा पुष्पा सूख चुका है इसलिए नहीं झुकेगा। क्या लॉजिक लगा रहा है सर? सारी घास को एक साथ चिपका दो तो झूलेगी नहीं। अरे भाई सॉफ्ट है तो झूली जाएगी कि नहीं झूल जाएगी? दिस इज हार्ड ग्रास। अब so many people, I want to tell you, so many people in this class have actually, we are living in India, have actually seen this. But right now, to prove something, to prove देर ज्ञान जबरदस्ती देवल से, अच्छा इसमें डेंसिटी ज्यादा, इसकी सैलिनिटी इज मोर, इसकी कैपिलरी इज मोर, फुल ऑन साइंस का मजाक उड़ाने वाले हैं ये लोग, फुल ऑन। साइंस का मजाक उड़ाएंगे। यही घास दूब की पूजा की जाती है। yes or no? We use it even in rituals. ये घास मंगा ली जाती होती है। छप्पर डाले जाते हैं इससे। वी हैव सीन थैच रूफ, लोग छप्पर की झोपड़ी बना देते हैं, वो भी हमने देखा है। बट यहां क्लास में नहीं मानूंगा, क्लास में क्या इनकी डेंसिटी ज्यादा, इसलिए सारे के सारे न्यूटन बैठे क्लास में। yes or no? Okay, now everyone, do you see this grass? Do you see this grass? This grass becomes dry for most of the year because it is semi arid area, but rainy season तो आएगा। rainy season will come or not? So this grassland, savanna grassland, is called rain green. Have you heard of evergreen? तो ये कौन सा ग्रासलैंड होता है? किधर गया? अच्छा फेज हो गया। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जेनेरिक नेम, जनरल और जेनेरिक नेम इसका क्या होता है? सवाना, तो सवाना बोलते हैं। ठीक है। दिस हैज हार्ड वुडी नॉन न्यूट्रिशियस ग्रास, कैन बी very tall like elephant grass. Trees are few and scattered. Trees are few and scattered, and that gives us something called as park landscape. And fourth is, these are rain green. These are not evergreen. These are rain green, not evergreen. So summers में they will stay woody, but during rains they will turn green also. Is everyone okay? पानी मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। सर दुर्गा पूजा में यही घास यूज होता है, मैं वही कह रहा हूं, सब लोगों ने देखा, सारे इंडियंस ने देखा है, एंड ऑल ऑफ यू आई डोंट नो व्हाई यू वांट टू बिहेव लाइक एनआरआईज। इज एवरीवन ओके? टेम्परेट ग्रासलैंड ऑन द अदर हैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑन द अदर हैंड, जेनेरिक नेम, नो जेनेरिक नेम। ईच कॉन्टिनेंट सेपरेट नेम, we will look at the names also. So everywhere this tropical grassland is called savanna. So in India, in Haryana, if I have this western UP, I have it, that is India savanna. In Australia, if I have it, Australia savanna. Africa, I have it, Africa savanna. Yes, North America, I have it, North America savanna. But in South America, only in South America, we have local names, Llanos and Campos. Only in South America, they have given them local names. So savannas of South America are called Llanos and Campos. Is everyone okay? But otherwise, we use the word savanna for tropical grassland everywhere. ठीक है? उसके बाद क्या यहां पर इनका कोई जेनेरिक नेम है, हर कॉन्टिनेंट में अलग है। नॉर्थ अमेरिका, व्हाट डू वी कॉल इट? स्टेपीज, सॉरी नॉट स्टेपीज, प्रेरीज। साउथ अमेरिका, पैम्पर्स। प्रेरीज आर शेयर्ड बाय यूएस एंड कनाडा, यूएस एंड कनाडा दोनों में आते हैं। पैम्पर्स लाई इन अर्जेंटीना। इज एवरीवन ओके?
Let us come to Europe. In Europe, we have pustas, P-U-S-T-A-Z, pustas and steppes. Pustas are in Hungary, Hungarian plains. Hungary is a country, and steppes are on Ukraine-Russia border. Ukraine-Russia border, not Ukraine-Russia border. That entire region is there. ठीक है, यूरोप के बाद क्या है? यूरोप भी हो गया. Africa. Now Africa is mostly a warm continent. They have tropical only, and the word savanna comes from Africa. But do they have anything? Yes, they have something which is called velds. Velds is pronounced as felt, F-E-L-T. Felt है कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका. एशिया में कहीं पर, एशिया में कहीं पर, एशिया में वी हैव मंचूरियन ग्रासलैंड. जो चाइना से आप मंचूरियन खाते हो, ये यहीं की घास से बन रहा लगता है. चाइना. इज एवरीवन ओके? एंड देन व्हाट डू वी हैव? अफ्रीका हो गया, ये हो गया. ओशियानिया, ओशियानिया में we have Downs and Canterbury plains. Downs and Canterbury. Downs is in Australia. It is in Australia, and Canterbury is in New Zealand. Everyone, can you see this screen is left brain? This screen is left brain. This screen is left brain. Are you with me? ये पूरे का पूरे स्क्रीन में सिर्फ जानकारी दी है. Only जानकारी. Only जानकारी. Is everyone okay? What kind of grass will be there in temperate? Temperate will be soft grass, soft green grass. Will there be elephant grass? No. Soft. Nutritious. Soft भी है, nutritious है. No trees, treeless grassland. समझ में आया? एक और अच्छी बात है, at some places, in some places, especially steppes में एक खास soil मिलता है. Since I've talked about soil, Chernozem, ये word आएगा तो ये steppe के soil है. This soil is very good. This soil is very very good for grasslands. Steppes में Chernozem है, black soil देता है. तो अभी आपको क्या बताया? टुडे somebody talked about pedalfur lateralization. वो किसका? इक्वेटर का है. इक्वेटर के पास के soils are these. Chernozem soils are the grassland soil. Which grassland? Temperate grassland. If a question comes in prelims, that is what we are looking. Yes or no? Everyone okay? तो जानकारी. अरे दिलीप कह रहा है, दिलीप अब नहीं कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन आंसर, लास्ट डे यार, मुझे पता है. बाकी लोग आई नो देयर आर फ्रॉम डे वन आई मेंटेन देयर आर 2 people. कुछ लोग इस एग्जाम के लिए सब कुछ कर जाएंगे, कुछ सिर्फ रीजन देते रहेंगे. दैट्स इट. इज एवरीवन ओके? सो माय जॉब टू गिव यू बोथ द ब्रेन्स, एंड आई एम वेरी वेरी क्लियर फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन. फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन व्हाट डू वी नीड? बच्चों जल्दी से बताओ, व्हाट डू वी नीड? राइट ब्रेन ऑल्सो, लेफ्ट ब्रेन ऑल्सो. So should I say left brain is wrong? No. Left brain is equally important. But उसके proportion समझ लो. Proportion समझ लो. When you are reaching higher level things, आपको लगता है मोदी जी को फैक्ट रटने चाहिए? Do you think a person at the position of Prime Minister of India should he be mugging up facts? क्या वो फैक्ट्स रटेंगे देश चलाने के लिए? उनके पास कुछ होते कई बार तो मोदी जी फैक्ट्स गलत भी बोल जाते हैं कि नहीं बोल जाते? मोदी जी कई बार फैक्ट गलत बोलते कि नहीं बोलते? But when people follow Modi ji, do they follow it for their facts or for the ideas he brings? Yes or no? You will find many leaders while speaking their facts might be wrong, but you understand in the context. ठीक है, यहाँ पर एक error हो गया. That's what I'm saying. So in the exam, just be, देखिए मैं आपको, there are exams which are only based on this. है या नहीं है? वो बच्चों का छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, स्कूल के एंट्रेंस के एग्जाम हो गए, उसके बाद थोड़ा हम हाई लेवल पे जाते हैं, तो वी हैव सीन एप्टीट्यूड टेस्ट में कुछ मेमोराइजेशन का जीके एग्जाम आते हैं. दे आर टोटली ऑन दिस, 100% आई एग्री. दे आर जीके बेस्ड एग्जाम. बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, जिसमें प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, इंटरव्यू भी है, दिस विल बी देयर. आप बताओ सिलेबस चेंज हो जाए चाहे ना हो जाए, ये चाहिए होगा कि नहीं होगा? थिंक अबाउट इट. सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा? थिंक अबाउट इट. सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा? ये तो नहीं होगा ना. दिस इज अ टेस्टिंग प्रोसेस व्हिच दे हैव. तो अभी हमें 13 साल से डरा रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. भाई हम तो पहले दिन से हम ये कर रहे हैं. ट्रू है ना? इज एवरीवन ओके? तो इस पर देश दुनिया नहीं चलती. ये देश दुनिया का कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है. दिस इज रॉ मटेरियल, दिस इज फिनिश्ड मटेरियल, दिस इज एकदम क्रूड, दिस इज रिफाइंड, दिस इज पेट्रोलियम, दिस इज डीजल एंड केरोसिन. थिंक अबाउट इट. So these classes have to bring both to you. मैं तो दोनों चीजें ला रहा हूं. I'm not saying this. भाई मेरा काम है ये बताना आपको. मैंने तो लिखा I took time. अब this box, understanding this box is right brain, but copying this is left brain. I'm giving you both. और आपको ये भी बता दिया दोनों की जरूरत है. बट आपको क्लास में कुछ खेलना है तो तब एक प्रॉब्लम होती. Is everyone okay? So I'm just inviting you, and I know you have your dream of making it big in this examination. Please develop both. That's all. ये देखिए, कभी मौका मिले तो विजिट कीनिया. कीनिया में बहुत बिग गेम कंट्रीज है. आई थिंक कीनिया की, अच्छा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में शो देम अ लॉट ऑफ पिक्चर्स. दिस इज टेम्परेट ग्रास. हरी भरी ग्रास, उसमें फूल भी निकल रहे हैं. एंड विल इट ड्राई? इट विल आल्सो हैव इट्स ड्राई. ऑल ऑफ देम आर सेमी एरिड. बट रिमेंबर, विंटर में ठंडे टाइम पे आपको प्यास ज्यादा नहीं लगती. दैट्स व्हाई दे आर बेटर. ग्रासलैंड बच्चों, पीपल हु आर वरीड अबाउट द कंटेंट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू, दे लाई इन द इंटीरियर मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट. देयर रेनफॉल इज मॉडरेट. कोर्स ग्रास होती है, कहां पर 3 मीटर तक जाती है. बिग गेम कंट्री, एवरीथिंग इज रिटन. टेम्परेट ग्रासलैंड्स का नाम लिख दिया, स्टेपी, प्रेरी, फेल्ट, डाउन्स. इधर भी लिख के दिया मैंने, इधर भी लिख के दिया, उधर बना के भी दिया, सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट. आइडिया इज व्हेन आई स्पेंड सो मच टाइम टॉकिंग टू यू ऑन दिस, आई एम वर्किंग ऑन योर राइट ब्रेन आल्सो. यू आर लुकिंग एट इट, यू आर थिंकिंग एट इट. इमीडिएटली आफ्टर क्लास यू गो एंड रिवाइज इट. काम हो जाएगा कि नहीं? ट्रू. नेक्स्ट बायोम इज टंड्रा बायोम. Tundra biome is that 70 to 80. So here what is it? Let me make something for all of you. Can you identify what is this? What biome is this? Can anyone tell me what is this?
व्हाट इज दिस, जल्दी बता देंगे। टाइगा, वेरी गुड, ये तो टाइगा है सर कोनिफर का, वेरी गुड सर, दिस इज टाइगा। नाउ आई वांट टू ड्रॉ लाइन, एवरीवन आई वांट टू ड्रॉ लाइन, दिस इज probably 70 60 or 70 and here it is 70, above 70, above this line the trees cannot grow. Why? Can you tell me why the trees cannot grow above this line? North of this line, no tree north of this line. Anyone, can you tell me why? Coniferous is okay, so coniferous taiga is trees, but a point will come that trees cannot grow as I am going towards the pole. Can anyone tell me? Very good, very good. No, not ice caps bachcho. I told you what does a plant need? Heat, sunlight, yes, and moisture, which is rain. So now as I am going to the poles, what will happen? Heat is getting reduced. The point after which there will be no trees possible because it is very cold. The point after which everything might be there. There might be water, there might be soil. Water bhi hoga, soil bhi hoga, but trees cannot be there. Why they cannot be there? Because it is too cold. That line is called tree line. समझ में आया tree line क्या होती है? Tree line एक mountain पर भी होती है. On a mountain also you will find either deciduous trees. If you go to hill station, Kullu Manali or Shimla पहुंच गए आप, धर्मशाला, you will find such trees. But then what will happen? After this line, no tree. This is ice cap and this is tundra. This is taiga. Even with height, I can tell you, this is on a mountain and this is on a latitude. This is what बच्चों? Taiga belt. 60 to 70 I told you is taiga. Box में भी बनाया था, real में भी दिख गया. Is everyone okay? नहीं, ice cap बेटा अभी और ऊपर आएगा. Ice cap will come here. But between taiga and ice cap, there is a region in which trees cannot come. Trees cannot come, and this one is 11-month frozen. So what is the difference between ice cap? Ice cap is 12-month frozen. Is everyone okay? Do you get what is the difference? Ice cap is frozen throughout the year. This one, tundra, is frozen for 11 months. 1 month it will thaw. Why will it thaw, sir? Because of heat. Summer will come in that hemisphere, so it will cause it to melt. When it melts, some vegetation will come. Everyone, did you get what is tundra? Everyone, did you get what is tundra? There is no tree in tundra biome. I am saying tundra biome starts north of tree line. Southern hemisphere, why no tundra? Why no tundra? Southern hemisphere, why no tundra? Because this itself is 60 degrees. So utna land hi nahi hai. There is no land in that latitude. Simple logic. The biome which is only in the northern hemisphere is taiga and tundra. South में नहीं मिलता है वो. South में नहीं मिल रहा है. So taiga, tundra is not there. But do we have ice caps? Oh yes, here is Antarctica. I will have ice cap. Ice cap मिल जाएगा. Everyone, did we understand what is tundra? Tundra is that land which is frozen for 11 months. 1 month it will thaw, and in that month, some vegetation will come. Specialized vegetation. What is it called? Lichens, mosses, और कुछ flowering plants which are called rhododendrons. सभी लिखवा दूंगा. Is everyone okay? वापस आ जाऊँ मैं इस पर? Shall I help you with this? आज स्लाइड्स में सब है, बट ये लिखना जरूरी था, इसलिए आपके नोट्स बनाए, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्री लाइन. ऐसा दिखता है टंडरा बच्चों. ये लाइन दिख रहा है, ये पेड़ दिखाई दे रहा है बच्चों. कैन यू सी दिस ट्रीज? So what would that be? What is this? Sir, that is taiga. Taiga is finishing, and after taiga what has come? Can you see? Ice has started coming. दूर taiga होगा, taiga की tree line that will end, and we are going towards the pole. दो जगह दिखाया आपको, या तो पोल की तरफ या माउंटेन पर. When we go to the pole, that is called Arctic tundra. It is located in the northern hemisphere, encircling the North Pole, extending south of coniferous forest of taiga, extending south to coniferous. तो ये आपने देखा, north and south में कौन सा आता है? Coniferous forest will come. So this is same thing. Arctic is known for its cold desert-like condition, growing season only 50 to 60 days. 50 to 60 days means 1.5 to 2 months it will melt. The average temperature here is minus 34 degrees, and the summer temperature is 3 to 12. Remember 3 to 12, will the ice melt? Think about it. Normally minus 34 है, but summers में will the ice melt? When the ice melts for how many days? 50 to 60 days. There something can grow. What can grow? That is called the vegetation over there. ये उसका summer हो गया, ये उसका winter हो गया. Is everyone okay? Greenland is an example of large landmass of non-polar ice. During the short summer season, the fringes of the ice cap, edges में, fringe का क्या मतलब होता है? किनारा. Greenland का fringe पर ice will melt. इधर जो edge है, that will melt. When it melts, the fringes will expose the land. During summers, temperature does not exceed 10 डिग्री के ऊपर नहीं जाएगा, 10 से नीचे ही रहेगा. And there is the concept of tree line. There is a tree line after which we will have coniferous forest. उसके नीचे टाइगा होगा ऊपर ही. ठीक है. Short growing season है. यहाँ 3 महीना लिख दिया. Personally, I think 3 months. We are writing 3 months because of global warming nowadays. Otherwise, that used to be 50 to 60 days. Tundra type vegetation में क्या grow करता है? Mosses, lichens, sedges. पूछा जाता है. They give a statement that this vegetation grows. So that is what we are talking about. Beside reindeer, wolves, foxes, musk and seal, ये यहाँ पर होते हैं. यहाँ पर कौन लोग रहते हैं tundra पे? Will there be lot of population in tundra? Everyone, will there be lot of population? No. Only some nomadic herders will be there. फिर वो जिंदा कैसे रहेंगे winters में? They hunt animals. कौन से animal जिनके पास फर होता है? फर क्या होता है? Thing that keeps them warm. Is everyone okay? Everyone. One is this. One is this. Other is what I wrote on the screen. Which one is easier to understand? ये तो बुक्स में है ना, लेफ्ट ब्रेन तो भरा हुआ है बुक्स. Did you see? I just decided to draw it. So in world geography I'll be doing it again. I'm not worried about it. But वो जो स्क्रीन का है, that is there. अब कोई कह रहा है, sir it will melt because of heat balance. क्यों heat balance? Heat budget. समर आएगी बर्फ मेल्ट हो जाएगी. Heat budget जबरदस्ती करना है. I'm तो saying everything, all motions, underlying cause is heat budget of the planet. But here the question is melting of ice. क्यों होगा यार? इसलिए होगा, गर्म हो गया. Simple. So again saying, when you listen to my videos, focus more on the juice of learning rather than this. ये तो सभी के पास है, ये तो अभी बुक में मिल जाएगा आपको, शाम तक ही हो जाएगा. Somebody said sir PDF अपलोड नहीं हुआ. आपने देखे PPT के PDF अपलोड हो गए, क्लास से पहले मैंने देख लिया, वो हो गए अपलोड. So I've seen that PDF of classes have been uploaded, and for more material we'll do that. ठीक है.
So I before I show my slide, see there is one thing is teacher will bring slide. Okay बच्चों ये मैंने slide बनाई this. Okay this. अरे you will be sleeping. Let us play with this. Let us know what tundra is. We have done so many things. उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद let us see what the books are saying. Then we see अरे books तो बहुत ज़्यादा फंसा के दे रहा है. Easy है. अच्छा मैंने बोला ऊंचाई पे भी टंडरा होता है, ऊंचाई पर भी होता है, हाइट में भी टंडरा. उस वाले टंडरा को क्या बोलते हैं? एल्पाइन टंडरा. So there are two types of tundra. Examiner is smart. Sometimes they put Arctic tundra. Arctic tundra is when you're going to the poles through the latitude. What is alpine? वो जो triangle बनाया था when you're going to the mountains. That's also the alpine tundra is located in mountains throughout the world. Everywhere in the world it is there. So polar tundra is only in the Arctic region, the edge of it and Antarctica. But ये तो कहीं पर भी हो सकता है. The growing season यहाँ पर थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि अगर tropical areas के mountains हैं वहाँ पर ज्यादा हो सकता है. But night time the temperature goes down. तो सभी ने देखा है mountains में अगर आप गए हो, mountains में आप गए, नंदा देवी की यात्रा पे जाइए, वैली ऑफ फ्लावर्स कहलाती है वहाँ पर. वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत सुंदर आपके घास के क्षेत्र आएंगे, उसके ऊपर आपका टंडरा भी शुरू हो जाएगा. ऐसे अगर किसी ने भी माउंटेनियरिंग किया हाईलैंड पे, अभी किसी बच्चे ने यहाँ पे लिखा बुग्याल्स, बयाल्स नहीं नॉट सॉरी बुग्याल्स और क्या कहते हैं मर्ग ये कहाँ पर होते हैं? जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, बुग्याल्स, ये सारे क्या है? हाई ऑल्टीट्यूड घास, टेम्परेट ग्रासलैंड. तो टेम्परेट ग्रासलैंड ऑल्सो कम विद, उसके बाद क्या? कोनिफर ट्रीज विल ऑल्सो कम. कैन यू सी? और उसके ऊपर जब मैं जाऊंगा तो दैट विल बी योर टंडरा. सिंपल लॉजिक. Sir, I saw it in Sikkim, Gulmarg, Sonmarg. Absolutely okay. See, I'm saying geography is real. Geography book में जाने से पहले we should spend time thinking about it. Then it will happen. ठीक है? Perfect. Ice cap का क्या status है? Ice cap कहाँ पर आएगी? Everyone, where will the ice cap come? Can we say that the ice cap will come after this? 60 to 70 आएगा. 70 to 80 tundra. 80 to 90 ice cap. Ice cap. tundra. Yes. एंड यहां पर कुछ हाई ऑल्टीट्यूड ग्रास भी होती है, जैसे गुलमर्ग. आई थिंक हाईएस्ट गोल्फ कोर्स गुलमर्ग में, गुलमर्ग उत्तराखंड में क्या होते हैं? बुग्याल्स. ये क्या है? हाई ऑल्टीट्यूड ग्रास. ग्रास हो सकती है लेकिन ग्रास के बाद भी क्या होगा? रॉक हो जाएगा. समझ में आया? ओके, यू आर फ्रॉम उत्तराखंड, वेरी गुड. आपने देखा होगा उत्तराखंड में भी ऐसे वेजिटेशन मिलते हैं. बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये मिलेंगे. सो आई एम टॉकिंग अबाउट रियल थिंग्स. टाइगर में यू अंडरस्टूड कौन सा है? ये वाला. टंड्रा में आई वांट टू मेक अ स्पेशल मेंशन फॉर प्रीलिम्स. सॉइल्स ऑफ टंड्रा हैव अ स्पेशल नेम. वी कॉल इट पर्मा. क्वेश्चन आएगा, बी रेडी फॉर दैट. व्हाट इज पर्माफ्रॉस्ट? व्हाट इज पर्माफ्रॉस्ट? सॉइल ऑफ टंड्रा. चरनोजेम इज द सॉइल ऑफ, चरनोजेम इज द सॉइल ऑफ, चरनोजेम अभी बताया था. तो कब बताया? मुझे तो पता नहीं. ये बताया चरनोजेम इज द सॉइल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड. टेम्परेट ग्रासलैंड. Get that? Pedal for lateralization. Where soil? Pedal for lateralization. Equatorial forest. Can lateralization happen in deciduous also? Wherever rain is there. Moist deciduous in India will have more lateralization. Get that? Deserts and grasslands have leaching or calcification. Deserts and grasslands have leaching or calcification. Deserts and grasslands have leaching or calcification. Desert and grassland will have leaching as a process or calcification? Calcification. Perfectly. Good. अब कहां पर आ गए? आइस कैप. कहां है बच्चों आइस कैप्स? Where are ice caps? 1 अंटार्कटिका, 2 ग्रीनलैंड एंड आर्कटिक पे कहां है? तो आर्कटिक तो एक्चुअली अगर होता है, आर्कटिक पर क्या होती है? दिस इज कॉन्टिनेंटल आइस. डू वी गेट दैट? तो 2 इज लैंड प्लस सी. कैन आई पुट दैट? दोनों हो जाएगा. These are called polar ice caps. And do you know because of global warming, now Arctic during summers will melt completely. Arctic is experiencing so much of melting that अब summers में because of global warming Arctic will not have sea ice. Greenland पे रहेगा. If it melts then it will be a big tragedy. How many of you have heard something called as the third pole? Third pole ऐसा सुना है आपने कभी? Third pole. What is third pole? HK. हिंदू कुश हिमालय कुनलुन. HK. हिंदू कुश हिमालय कुनलुन. ये क्या है? लार्जेस्ट एरिया अंडर नॉन पोलर आइस कैप. लार्जेस्ट आइस एरिया. इज एवरीवन ओके? अगर नहीं सुना था समझ में आ गया? तो वर्ल्ड में आइस किधर है? पोलर आइस कैप्स ये है. When we are talking about it, non-polar ice cap. ये कई बार आएगा, आपके एनवायरमेंट के टीचर बताएंगे आपको. एनवायरमेंट टीचर will be talking about that in IPCC. He'll use the term non-polar ice cap. Where are non-polar ice cap? वो इंडिया के नॉर्थ में है. This is your third pole. हिंदू कुश हिमालय एंड दिस थिंग. सर पामीर प्लेटू. बेटा पामीर तो बस एक छोटी सी नॉट है. दिस इज पामीर और पामीर से निकलता है हिंदू कुश हिमालय. समझ में? पामीर छोटा सा एक जगह है, एक नॉट है जहां से माउंटेन्स रेडिएट करते हैं. दिस होल एरिया इज एवरीवन ओके? तो समर में मेल्ट होगी, बिल्कुल होगी. द वर्ल्ड हैज अ प्रॉब्लम. इनफैक्ट यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया इस पर इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. अब मैं एनवायरमेंट की क्लास की बात है बट ज्योग्राफी में एक मेंशन कर रहा हूं. द कंसर्न्स ऑफ आर्कटिक रिमिनेशन आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. व्हाई? जो आर्कटिक के चारों तरफ के देश हैं उनकी चिंताएं बाकी विश्व से अलग हैं. व्हाई? देयर द आइडिया ऑफ आर्कटिक मेल्ट हैज टू कम.
तो हम बोले सर क्लास के एंड में पीजी एंट्रेंस जेएनयू पीजी एंट्रेंस के लिए बताइए बेटा, जेएनयू पीजी एंट्रेंस के लिए उनके प्रीवियस ईयर जरूर कर लीजिए, यू विल गेट दैट, जेएनयू बहुत अच्छे से बता देता है क्या एग्जाम होने वाला है, डोंट वरी अबाउट। व्हाई इज इट कॉल्ड थर्ड पोल? अरे बेटा थर्ड कोल्ड पोल, कोल्ड पोल, कोल्ड पोल कोई ऐसा पोल नहीं है ठंडा, ठंडे का एक और स्थान अगर देखना है बर्फीला एक और स्थान तो दुनिया का तीसरा है। सर इसे तीसरा क्यों कहते हैं? अरे भाई दो हो गए इसलिए तीसरा आया, कोल्ड पोल, ऐसा नहीं बोला अर्थ पोल, कोल्ड पोल, डू यू गेट दैट? कोल्ड पोल, थर्ड कोल्ड पोल, एक ये कहने के लिए कि इट इज, उसको इज्जत देने के लिए कि इट इज दैट इंपॉर्टेंट, दिस इज दैट इंपॉर्टेंट एज दिस, प्लीज डू नॉट फोकस ओनली ऑन द मेल्टिंग ऑफ 1 and 2 इन द वर्ल्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस इज व्हाई टू गिव इट दैट रिस्पेक्ट दे हैव कॉल्ड इट द थर्ड कोल्ड पोल। अब मजे मजे में लेफ्ट ब्रेन कहेगी अर्थ तो इसके अराउंड रोटेट नहीं करती, अर्थ इज नॉट रोटेटिंग अराउंड इट, व्हाई डिड दे कॉल इट पोल? अबे होल कह देते, मुझे क्या पता, पोल कह दिया, इज्जत देनी थी, मतलब कभी भी कुछ भी। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, बेटा एनवायरमेंट एंड डिजास्टर की क्लास अब यहां नहीं ला सकते और इंडियन ज्योग्राफी में बात करेंगे, डोंट वरी, लेट अस फिनिश व्हाट वी आर डूइंग। अंटार्कटिका इज द ग्रेटेस्ट सिंगल स्ट्रेच ऑफ आइस कैप, परमानेंट आइस है इतनी ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर थिक, अंटार्कटिका हैज 2 किलोमीटर थिक हाइट, this is the highest mean elevation which is twice as high as the second rise, so Antarctica is having a height also, and that is because of, so I want to tell you Antarctica is a continent, everyone we have seen this is land and this is water, Antarctica as a continent is much below water level, much below sea level, much below sea level, because on top there is ice, so why is the continent so low? weight hota hai na ice ka, the ice has pressed it down and this is why the continent is below sea level, so which continental landmass is below sea level? Antarctica. Whose continental shelves are the deepest continental shelves in the world? Antarctica. Remember continental shelf तो 200 मीटर में खत्म हो जाती है, but here the land itself is 2 kilometer deep. That is a very very famous question which is coming over there. The cold winds called blizzards in Canada reach velocities of 200 kilometers per hour, and Canada happens to be the windiest of all continents. क्योंकि इसको कुछ ब्लॉक करने के लिए नहीं है, winds are blowing over there, winds are blowing over there, and very cold wind. These are some left brain facts which will help you. Is everyone okay? The continent of Antarctica in south polar region is covered by thick permanent ice sheet. Penguins are familiar, so I have just talked about the southern ice cap. Northern ice cap का क्या issue है? Northern ice cap will melt in the summer. Arctic ice is no longer there. I did BSc from IGNOU. Am I eligible for admission in JNU? Yes, you are eligible. You should have some marks requirement in your graduation. एक बार चेक कर लेना prospectus. As far as I know, you are eligible. सर 8 किलोमीटर की हाइट पे आइस कहाँ से आया सर? पहली बात तो 8 किलोमीटर आप कहाँ से लाए मुझे पता नहीं, 8 किलोमीटर कहीं पर है या नहीं। सेकंड थिंग इज 8 किलोमीटर पे हाइट पे क्या टेम्परेचर होगा इफ वी लुक एट नॉर्मल दिस थिंग, डू यू नो लैप्स रेट इज व्हाट? 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 6 into 8 48, व्हेन यू रीच 8 किलोमीटर हाई द टेम्परेचर विल बी 48 डिग्रीज लेस, ये मैं पहले करा चुका हूँ, तो ये बीच में अभी राजर आर्यन इज पुशिंग दैट, सोचिए अपना लैप्स रेट लगाइएगा। अंटार्कटिका नो मेल्ट इन समर सर, बेटा अंटार्कटिका डज मेल्ट, वर्ल्ड इज कंसर्न्ड अबाउट इट, जैसे ग्रीनलैंड का कॉर्नर है ना, कोने मेल्ट होते हैं ना, कोर नहीं होता, ऐसे अंटार्कटिका का भी कॉर्नर्स द एजेस आर मेल्टिंग, अंटार्कटिका इज आल्सो मेल्टिंग बट अंटार्कटिका इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, सेंटर नहीं मेल्ट हो रहा बट एजेस आर मेल्ट, ड्यूरिंग समर्स दे मेल्ट बट ड्यूरिंग विंटर्स दे विल फ्रीज आल्सो, सो द इशू इज व्हिच रेट इज मोर, इफ द मेल्टिंग रेट इज मोर देन इट्स अ प्रॉब्लम, इफ द फ्रीजिंग रेट इज मोर तो अच्छी बात है हो जाए। तो ये जो एज है ना बच्चों, एज पे मेल्ट होता है, दिस पेनिनसुला, दिस इज कॉल्ड द अंटार्कटिक पेनिनसुला, इसके आसपास इन न्यूज योर एनवायरमेंट टीचर विल टॉक अबाउट दिस, लार्सन बी आइस शेल्फ हैज कंप्लीटली मेल्टेड, तो यहाँ पे आइस शेल्फ्स हैं, दे आर मेल्टिंग, गेट दैट, अगेन एनवायरमेंट का पार्ट है सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। सर इफ थर्ड पोल मेल्ट देन व्हाट विल हैपन? थर्ड पोल इफ इट मेल्ट्स एवरीवन, इफ ऑल द ग्लेशियर्स दे विल मेल्ट, so IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, your environment class will tell you, IPCC came up with a report on HK glaciers. एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है which says कि ये मेल्ट हो रहे हैं, and if they melt like this, they have predicted that by 2100 they खत्म हो जाएंगे। अगर खत्म हो गए, it will be the biggest tragedy for humanity and might be the last thing that happens to humanity. ठीक है, बहुत बड़ी चीज होगी। Is everyone okay? तो कह रहे सर ग्लेशियर कैसे बनते हैं? पानी के जमने से बनते हैं, वो कैसे बनेंगे भाई? Is everyone okay? टुंड्रा के कुछ पावर पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे। दिस इज टोटल फॉर प्रीलिम्स। पोलर वर्ल्ड लाइज इन द कोल्डर एक्सट्रीम ऑफ इक्वेटर टू पोल। समबडी सेड सर ग्लेशियर कैसे बनते हैं? यू कैन इमेजिन, नो माइंड इन दैट, हैव ऑल ऑफ अस सीन आइस? घर में बर्फ जमाते कि नहीं जमाते हैं? जमाते हैं ना, क्यों जमती है? फ्रिज में ठंडा हो जाता है इसलिए। ये पूछ रहा है सर ग्लेशियर कैसे बनते हैं? ग्लेशियर कैसे बनते हैं? इंद्रदेव इंस्ट्रूमेंटल होंगे? आइस के कोई देवता है तो बताना यार, मुझे आया नहीं वो, है ना? पूछ रहा है ग्लेशियर कैसे बनते हैं। आइस के देवता अगर आपको याद आएंगे तो बताना भाई, मुझे याद नहीं रहे, नहीं तो मैं बता देता सच में। इक्वेटर, पोल, इक्वेटर इज warm, yes, and poles are cold. Have we done climate class? Why these are cold? We know that. So where are polar ice cap? Are they towards warm side X or are they towards cold side? Where are ice caps? Where are glaciers? पवन देवता नहीं है, पवन देवता कहां से बर्फ जमाएंगे? गलत मत करो, तुम सही देवता को कॉल नहीं करोगे तो फिर हेल्प कैसे होगी? माना आज हनुमान जयंती है तो हनुमान जी सब कर सकते हैं, बट फिर भी अरे गलत वाले देवता मत बताओ मुझे, ठीक है? Which side is why? Everyone is writing. इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? The polar world lies on the colder side of this continuum from warm to cold. And remember, warm, cool, and cold, and very cold, frozen. So this is called a continuum. There will be heaviest snowfall. सबसे ज़्यादा snowfall यहाँ होगी.
सबसे ज्यादा लोएस्ट मीन डायरनल एंड एनुअल टेंपरेचर, यहाँ ठंडे रहता है, यहाँ भी टेंपरेचर चेंज नहीं होता। लीस्ट बायोडाइवर्सिटी को रहेगा नहीं, इधर कैसे रहेंगे? बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, बैक्टीरियल एक्टिविटी इधर होती नहीं, रिमेंबर इक्वेटर मैक्सिमम बैक्टीरियल एक्टिविटी बिकॉज इट वाज देयर, इधर कुछ नहीं, एकदम जर्म फ्री एनवायरनमेंट है भाई। सर क्यों जर्म फ्री है? अरे सब फ्रोजन है एकदम से, इट इज लाइक एन आईसीयू, कोल्ड स्टोरेज है। डू यू फाइंड, पता है जो लोग पोल पे जाते हैं अगर वो मर जाते हैं, इवन माउंट एवरेस्ट पे वी फाइंड पीपल बेरीड इन आइस, वो जब निकलते हैं तो पता चलता है तो ऐसे फ्रीज हो गए थे, तो फ्रीजर में कोई टेंशन नहीं। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर यहीं पर अंटार्कटिका में, थिकेस्ट आइस शीट आई टोल्ड यू ऑलमोस्ट 1800 मीटर, इतना वो है। लोएस्ट बायोमास, जब कुछ जिएगा ही नहीं उधर तो कितना बायोमास है? सबसे कम, न्यूट्रिएंट चल ही नहीं रहे, सब तो जमा हुआ है, दैट्स देयर। कुछ अगर रहेंगे तो कौन होंगे? फर बियरिंग, सील, ऑटर, ये जो हो गए ये रहेंगे, यहाँ पे फर फार्म्स यहीं बनेंगे अगर फर को इकट्ठा करना। सर फर क्या होता है? ऊपर का जो उनका ऊन होता है, दैट इज कॉल्ड फर। पुअर ड्रेनेज, व्हाट इज पुअर ड्रेनेज? पुअर ड्रेनेज मींस रिवर्स जो फ्लो करती है वो फ्लो नहीं करेंगे, क्यों? दे आर मोस्टली फ्रोजन एंड द एरिया इज फ्लैट, सो वो स्लोप नहीं मिलती है, ठीक है। शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, क्यों? ऑलमोस्ट 12 मंथ्स तो दे आर फ्रोजन, ऑलमोस्ट 12 मंथ्स दे आर फ्रोजन, तो ग्रो करेगा कहां पे? 12 महीने फंसा हुआ है। लॉन्गेस्ट नाइट, ये तो भूल ही गए थे। किसी ने कहा सर ग्लेशियर क्यों बनते हैं? बेटा 6 मंथ्स नाइट होती है यहाँ पर, देवता तो तुमने बताया नहीं। सर ग्लेशियर क्यों बनते हैं? एंड एक ने क्वेश्चन पूछा सर अगर सारे के सारे ग्लेशियर मेल्ट हो गए तो क्या होगा? सुनो अभी हम में से किसी को कुछ हो गया तो क्या होगा? फिर तो फिनिश हो जाएगा। बेटे बेटे ऐसी वाली बात बोलेगा, ठीक है? तो जब सब खत्म हो जाएगा तो हो ही जाएगा, तब तो प्रलय आ जाएगी। बोले सारे ग्लेशियर मेल्ट हो गए तो क्या होगा? चेक कर लें, अगर जिंदा रहे तो चेक करेंगे। पानी कहां से लाएगा? द होल साइकिल्स विल चेंज। ये सारा ग्लेशियर मेल्ट मार्स हो गया, मार्स में ये हो चुका है पहले, मार्स यूज्ड टू हैव वाटर एंड नाउ इट इज गॉन, डू वी गेट दैट? नॉट अ सिंगल ट्री बियॉन्ड ट्री लाइन नाउ, तो यू नो ट्री लाइन के ऊपर है, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक में है, कोल्डेस्ट डेजर्ट्स आर दीस डेजर्ट्स आल्सो बिकॉज़ देयर इज नॉट मॉइस्चर इन द एयर, वेरी कोल्ड एयर, लीस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। कौन रहेगा अंटार्कटिका में? कौन रहता है? सर सूर्य देवता की कृपा, फिर तो सूर्य देवता जब नहीं होंगे तब आएंगे। सर होल ग्लेशियर वुड नॉट, कुड नॉट मेल्ट। एक बात बताऊं, दिल पे मत लेना, होल ग्लेशियर्स कुड नॉट मेल्ट। planet earth has seen times when there were no polar ice caps. Climate change has happened many times in the history of this planet, not of mankind, of this planet. I want to tell you, even during the dinosaur time, polar ice caps were not there. पानी था लेकिन उतना ठंडा नहीं था. Those were warm phases. So please do not rule out things with limited knowledge. Sir, it can never happen. If it happens naturally, then you and I will be wiped out like dinosaurs. But the sad thing is, it is not happening naturally. We human beings are doing it. Do you feel guilty or not? If nature comes, if something comes and strikes planet Earth and everyone dies, that's a natural thing. Nobody can stop it. But if because of human actions, things are happening that way, is it a tragedy or not? That is the problem of current global warming. Is everyone okay? Sachin is saying like ice age. Yes, there have been ice ages also. There have been warm phases also. But those were natural. Your environment class will tell you that these are mostly man-made. इसलिए हम लोगों को guilt भी होता है. Everyone with me on this? What are coral reefs? Now we're going into the sir, Antarctica. There are laboratories of the country. Why? In Antarctica, there are laboratories of the country. Why? After the age of colonialization, the colonial powers wanted to colonize Antarctica also. After the age of colonization, they had made their colonies. They wanted to colonize Antarctica also. The world realized this will not be a good thing. No country should have control over Antarctica. So a treaty happened. That treaty is called the Antarctic Treaty. And it is in the Antarctic Treaty that the world agreed, listen to me, the world agreed to declare Antarctica as the continent of science. As a continent of science, what does it mean? It simply means that no country can colonize Antarctica. However, countries will be allowed to do research for the benefit of the planet and understanding its processes and life. That is why countries can have their research stations over there. Do we get that? And who will regulate it? Antarctic Treaty. Push, मिल गया उत्तर? चलिए. Coral reef. So what are coral reefs? So coral reefs are calcium carbonate, calcareous structures, rocks made up of the stratified layers of exoskeleton. पहले लिख लो इसको, exoskeleton of polyps. What are polyps? Marine organism. Polyps are marine organisms. This is what a polyp is. A soft-bodied animal polyp. Sea anemone type के छोटा सा कीड़ा है. Get that? Now, happy polyp, small little कीड़ा, insect है, you can call it, and he's very happy. Why happy? He does not have to read NCERT. He's not writing UPSC. He doesn't have to tolerate any such comments which come over here. Happy life myself. But there is a problem. One, he wants food. Second, protection from predators. So first thing was save yourself. That is left brain. So first he applied left brain. Left brain is always protection. So he started secreting saliva. और saliva से क्या निकला? Saliva. से अपने चारों तरफ, around itself, it created a shell. This is called the exoskeleton. Without even registering from Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana, he made self आवास, अपना घर खुद बना लिया, and this is called exoskeleton. एक तो endoskeleton होता है, bones inside our body are what? They are endoskeleton. ये इनका exoskeleton है. So they secrete calcium carbonate, they make their own thing, अपने को बचा लिया. Remember left brain सबसे पहले क्या बताती है? Left brain is save yourself. फिर अब बोला खाना खाने जाना है, तो moment he comes out to eat food, he becomes the food of the predator. फिर घर खाली हो जाता है, फिर sad हो गया, अब क्या करें? So he started thinking क्या करूं? So he thought, he came up with an idea, why not rent my house to someone who can cook? ठीक है, अपना खोली भाड़े पे चला दिया. किसको दे दिया? To something that can cook.
यहाँ पर ये रंग बन गया, ये प्रॉब्लम है इस कलर में, कलर ही नहीं है, कलर लिमिटेशंस आने लगते हैं। एल्गी, व्हाट इज एल्गी? माइक्रोस्कोपिक प्लांट. It is a producer. Producer means it can do photosynthesis and can produce food. Do we get that? So, algae comes and algae is looking for habitat. And Mr. Polyp is looking for food. Mr. Polyp is looking for food. So Mr. Polyp says, use my exoskeleton, you live on this. Algae says, okay, I will make food. You don't go out, you eat my food. तो इसको क्या कहते हैं? In ecology, or ecology environment teacher will tell you, symbiosis. सहजीविता. जीविता, लिव एंड लेट लिव, तू भी खुश मैं भी खुश, तो ये दोनों हैप्पीली रहते हैं. एंड दिस इज हाउ द कॉरल्स गेट देयर ब्यूटीफुल कलर्स. देयर आर मल्टीपल कलर्स इन देम एंड दिस इज हाउ दे गेट देयर कलर्स. एंड आई वांट टू टेल यू अ वैरायटी ऑफ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉरल्स. सम ऑफ देम लव टू लिव इन क्लस्टर्स. तो मिलियंस ऑफ देम ऐसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की जगह ये कर देंगे. एंड व्हाट विल दे फॉर्म? दिस कॉलोनी मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी कॉल्ड अ रीफ मेड अप ऑफ layers of exoskeleton of polyps. Do you understand the definition now? कैसे बनता है? ठीक है. अब the catch is that what are polyps? What are polyps? Marine organism. So where will the corals be formed? They will be formed in oceans and seas because this organisms lives in salt water. Number one, oceans and seas. Second thing is they will be found in shallow water up to 200 meter. Why? Photosynthesis is needed. Photic zone. Remember photic zone? जहां तक light penetrate कर सकती है. And these organisms cannot tolerate much cold, so they are also found in tropical water. What they don't like? They don't like too much heat or cold. They do not like too much muddy water. Why? Mud will go and polyp के मुंह में चिपक जाएगी. Which polyp will suffocate and die. They don't like too much of heat and cold. They don't like too much of muddy water. They do not like. So that is why question comes, why corals are not there on river mouth? So not on river mouth. क्यों नहीं होता river mouth पे coral reef क्यों नहीं बनता है? Because river will bring sediments that will choke them. ठीक है? And they have a salinity range also. Salt water में they have a salinity range. They are not fixed on this thing, but एक range है जिसको वो tolerate कर लेते हैं. Everyone with me? Are we clear? आदर्श शुक्ला को लगा आखिरी मौका है, आखिरी क्लास है. लिख रहे हैं आसिफा बंगाली सिखाओगी मुझे? ज्योग्राफी तो सीख नहीं पाए. आसिफा को क्या उम्मीद दे रहे हो कि बंगाली सिखा पाओगे? है ना? और तुमको बंगाली सीखनी है. तुमको पता आसिफा आसिफ है, आसिफ सिखाएगा. आसिफ से सीखना चाहोगे? आसिफा से ही सीखना है. चाचा जो है लास्ट में सोचे आखिरी हाथ मार ही देते हैं मोहब्बत का, बंगाली सिखाई दो. आसिफा आपसे कहीं ज्यादा समझदार है, वो सीख लेगी. और शुक्ला जी को लगा कि लगे हाथ हम दिखा दे, हमें बंगाली सीखना है. तो भूगोल सीखे नहीं शुक्ला जी, बंगाली कैसे सीख जाओ? आसिफ पढ़ाएगा तो सीख लीजिएगा. आसिफ पढ़ा दौड़ दौड़ के पढ़ाएगा. बढ़िया हो गया लगता है 10:30. ठीक है, कॉरल समझ में आया? शुक्ला जी हैं बंगाली सीखने पहुंचे, ठीक है. और पूछ रहे हैं हमारे ऊपर कोई एल्गी आके बैठेगा? एल्गी बैठेगा. सहजीविता करना है इनको, भूगोल से हो नहीं पाया. आइटम एकदम फुल ऑन. उसके बाद बोलेगा सर हमको समझ नहीं आ रहा है. कॉरल रीफ 3 मेन टाइप्स होती हैं. कुछ माउंटेन के पास होती हैं, ऑन द एज ऑफ इट दोज आर कॉल्ड फ्रिंजिंग रीफ्स. Slightly away those are called barrier reef, and very far they are called atolls. You can see these are coral reefs. The 3 types of reefs come from theories which are taught in geography optional. Darwin की theories हैं, you don't need it, you just need the names. Fringing reef, barrier reef and atoll. There are 3 types of it. Beautiful places where a lot of what biodiversity, and a lot of this will be taught in the environment class also. So I am just doing the geography part of it. Just the geography part of it. In environment we talk a lot about them. Unique ecosystem है, threat चल रहा है. We are in the 3rd global coral bleaching event in the world. So what is coral bleaching? Environment में बताया जाएगा that symbiosis breaks. ऐसा ना, वो जो बंगाली सीखने पहुंचे पता चला फ्रॉड निकले तो वो एल्गी चली गई. तो आप जब फ्रॉड निकलते हो तो सिम्बायोसिस टूट जाता है. उससे क्या होता है? दिल टूट जाता है. उसको कहा था ब्लीचिंग. तो व्हेन द कलर एल्गी गोज, एल्गी इज लॉस्ट, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग. तो वो सारी चीजें कहां पढ़ाई जाएंगी? एनवायरमेंट क्लास में. बट आई जस्ट थॉट ऑफ ब्रिंगिंग द ज्योग्राफी पार्ट ऑफ इट. सो व्हाट डू दे वांट? समबडी आस्क्ड वेयर आर दे फाउंड? क्लीन सेडिमेंट फ्री सॉल्टी वाटर. और कोरल के जो कलर होते हैं ये ज़ूओज़ैंथिला नाम होता है. अगेन एनवायरमेंट में फिर बताया जाएगा. दे विल बी डूइंग फोटोसिंथेसिस, सो दे वांट शैलो वाटर. एंड इफ द वाटर बिकम्स टू क्लाउडी एंड मर्की विद द सेडिमेंट्स, एक तो लाइट भी कटेगा, लाइट विल आल्सो रिड्यूस एंड द पॉलिप आल्सो माइट डाई. Warm water, most of the corals prefer this temperature range. वो भी बता दिया. This is prelims के लिए 23 to 29. So when global warming is happening, temperatures might go very high. That is killing them. Is everyone okay? Some of them can tolerate even more. And they also need other species around them. Why so many fish come over there? If alga is too much, अगर घास ही बहुत ज्यादा हो जाएगी alga, then also the balance is broken. So herbivores are there. Fish will come. It is not that all the food which alga prepare और वो सारा polyp खा जाएगा. Polyp तो बहुत एकदम साधु आदमी है. वो एकदम साधु है. वो थोड़ा थोड़ा खाता है. कंदमूल पे चलता है. वो थोड़ा सा खाया happily and sleeps. उसको कोई क्लास नहीं अटेंड करनी है. ऐसा नो मजे से रहता है. बट देयर आर अदर स्पीशीज आल्सो व्हिच विल कम फॉर फूड. तो यूं समझ लीजिए एक लंगर है, ये लंगर है और लंगर में बट रहा है.
तो घर किसने दिया? पॉलिप ने दे दिया, पॉलिप का घर है और उस पे एल्गी इज मेकिंग फूड एंड एवरीबडी कम्स एंड ईट्स इट, सो पैरट फिश एंड टर्टल्स विल कम एंड अ ह्यूज बायोडाइवर्सिटी इज क्रिएटेड। ठीक है, कॉरल ब्लीचिंग अभी आप देख रहे हैं, इस पर एल्गी है, एल्गी स्टार्ट्स डाइंग एंड फाइनली एल्गी इज लॉस्ट, सो द कलर विल चेंज। I'm leaving this for environment class, but the geography part is this: where in the world are coral polyps found? What are the 3 types? That was geography, and rest will come in environment. मैंग्रोव में लेकर आया हूं, दिस इज द मटेरियल दैट इज फॉर यू, योर एनवायरमेंट टीचर वुड बी डूइंग मैंग्रोव्स आल्सो। बहुत से लोगों ने मैंग्रोव देखे नहीं होते क्या होते हैं, तो मैंग्रोव आर द कोस्टल वेजिटेशन, पार्टली सबमर्ज्ड, समटाइम्स दे आर अंडर वाटर, समटाइम्स दे आर दिस, एंड कैन यू अंडरस्टैंड नाउ टाइडल राइज एंड फॉल? So this is low tide, when high tide will come it will go up, low tide, high tide, a lot of things. Mangroves are salt tolerant plant, environment class you will get to know the significance of mangroves. They can protect the coast against erosion, they are also biodiversity regions, they are good fishing regions, that is what we are talking about, and lot of deforestation is happening in mangroves, that part. So role of mangroves are all to do with environment, but from my side I have brought the geography of it. Where are they located? Again, tropical one. Can you see 30 to 30? Just like coral reefs, mangrove also, the species plant grow in the tropical forest. And remember, what is my source? My source is this book called Global Forest Resource Assessment 2020 FAO. ठीक है, FAO की रिपोर्ट के हिसाब से 113 countries have mangrove forest and around 14.7 million hectare is there. The largest mangrove area is in Asia, especially you can see this area followed by Africa and America. So I have already talked about forest, उसमें एक special forest more from the environment point of view that I wanted to bring, so that my material, your content requirements are latest, up to date. That is our promise at KGS. Our promise is we'll give you all the content that is needed, updated also, and इसके साथ में अगर और कुछ भी चाहिए, इसके साथ अगर और current affairs होगा, we'll take those classes and the questions. ठीक है, conservation and all I'm leaving it for the environment class. Everyone, this was general geography for you. I do not know that whether this has helped create a bond with geography or not, an interest in geography or not, but trust me, I know that I've created a foundation upon which world geography will be put, a foundation upon which Indian geography will be put, and my intention, sole intention is prelims, mains, interview, anything comes on geography, we will be able to not only just survive it, master it. That's my intention. Get that? I'm glad that many of you followed instructions, you've been jotting also, you've been using PowerPoints also. Other than the PowerPoint PDF, we will be providing you more PDF on this. Get that? So thanks a lot. Today's class, again, it's 10:30, time to end this particular topic. Not that I'm ending all the classes, but this topic ends over here. I will be meeting you on the PYQs. PYQs will not be a 2-hour class, shorter classes we will keep. The schedule will be announced. As of now, it looks like this Saturday, but probably I'm not committing for Saturday, so we will announce it. Please be aware of the announcement section. Get that? So my team gets to see all your comments. So with those comments, we know what is the level of understanding, what are you able to grasp, and where you are missing. And to all the students who chose for some time to let a crack come in their glass, they were having some crack, they thought, yeah, let's have fun. I do understand that you have the ability, but probably not the intention right now. Whenever you choose to, please make sure you repeat these classes with the spirit that I have to clear the exam. Okay? Class 11th NCERT Part 1 is the companion book for this course. Companion book for this course is Class 11th Part 1. I hope you've done that. If you've done that, repeat it. If you've not done it once, I would want you to do it once and twice. Thanks a lot. All the best. I will see you soon. Have a great day. Jai Hind.